how you started this and what is the reason, what is the story behind Every Infant Matters. आप बिलीव नहीं करोगे, हर साल 500,000 children of this world they become completely irreversibly permanently blind because of vitamin A deficiency. जब भी एक कंपनी की शुरुआत होती है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या फिर सेक्शन 8 कंपनी हो, स्टार्टिंग के टाइम काफी स्ट्रगल वाले होते हैं. हाँ जी, डेफिनेटली. We really want to listen and understand the situation and the circumstances जो आपने फेस किए during 2017 or maybe 2019. बीच में अभी recently someone was blackmailing us for money and then when we didn't give the money started defaming us on LinkedIn. Oh. मेरे सारे contacts को एक message भेजा कि this NGO is not proper. But having a picture with Bill Gates. Yeah. तो बिल गेट्स के साथ पिक्चर होना इट्स अ ड्रीम फॉर आई कुड से आज के टाइम पे वर्ल्ड में लोगों की एक ड्रीम है कि मैं उससे मिल पाऊँ. फोटो एंड क्लिक करवाने, अवार्ड लेना इज समथिंग डिफरेंट. If we are not treating this, if we are not preventing this horrible situation that children are becoming blind and then they are dying also, Yeah. then what are we doing for the society? When you start something, there is always a very big risk of failure. Yeah. I think there is 50% risk of failure when you start anything. Welcome to the Changemakers Show. Welcome to our podcast series, where we dive deep into the inspiring stories of remarkable individuals making a difference in the world. Today, we are honored to have Dr. Radhika Batra, a renowned pediatrician from Apollo, as our guest. Not only is she dedicated to providing top-notch care to children, but she's also the founder of NGO Every Infant Matters, ensuring unprivileged children have access and essential resources and opportunities. In addition to that, Dr. Batra was honored with the Global Goalkeeper Award from the Gates Foundation presented by Mr. Bill Gates and Melinda Gates. She's a two-time winner of TEDx and has been recognized as one of the 4 study under Tardy. Once again, please welcome Dr. Radhika Batra. हेलो डॉक्टर राधिका, इट्स अ प्लेजर टू होस्ट यू ऑन आवर शो द चेंज मेकर शो. कैसे हैं आप? I'm good, yeah. Thank you for having me here. It's a very big honor. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम साउथ एक्स. सो आज का शो हम बात करने वाले हैं, वी विल बी टॉकिंग ऑन एवरी इन्फेंट मैटर्स. You are the founder of Every Infant Matters. So we really want to start from this. How you started this and what is the reason, what is the story behind Every Infant Matters? So I think the story is interesting and I think हम सब लाइफ में कुछ कुछ फेस करते हैं and हमारे जो भी experiences होते हैं they sometimes really motivate us to get up and do something to make a change. And for me, it was a very personal motivation and then it became a professional motivation as well because I am a pediatrician as already you told everybody. Yeah. So there were multifold motivations and I'll just talk about those. So what happened that when I was in school, I had this very rare sort of illness and that illness was such that it could only be diagnosed after my scans were sent to 7 countries to specialists who were experts in that field. So I just got the feeling that I was diagnosed and I was treated only because my parents were doctors and they had these kind of contacts, they had resources, they had money to get me treated and to get me well again, to get me well enough to become a doctor, to get me well enough to face life with all its adversities. So when I thought about all this, I figured that इस देश में इतने बच्चे हैं और इस वर्ल्ड में इतने बच्चे हैं Yes. जिनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, Right. जो जिनके डिजीजेस नहीं डायग्नोज हो पाते और वो इलाज के लिए या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भटकते रहते हैं या फिर उनकी फाइनली अनटाइमली डेथ हो जाती है Right. क्योंकि कोई इलाज नहीं हो पाता, कोई डायग्नोसिस ही नहीं बन पाता. Yes. सो दिस वाज वन मोटिवेशन कि मैं ये जो इनइक्वालिटी है हेल्थ केयर स्पेस में इंडिया में, अफ्रीका में, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस में, ये हटाना चाहती थी. दैट आई वांट दैट एवरी चाइल्ड, एवरी ह्यूमन बीइंग शुड हैव इक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर irrespective of their capability to pay, irrespective of how much knowledge and resources they have. I wanted everybody to have an equal access to the kind of health facilities that are available in the world. The best of the best health facilities should be available to every single person. That was my that was my idea behind starting Every Infant Matters. But of course जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो वो बहुत ब्रॉड एरिया है. Yes. आपको टू स्टार्ट
something, I had to pick one area. And when I was in my MD days, I was doing MD in pediatrics and I was studying in Ghaziabad. So in that area there was a lot of malnutrition. Malnutrition यानी कि कुपोषण, यानी कि जो बच्चे थे उनको खाना नहीं मिल पाता था क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पेरेंट्स की सही नहीं थी या थी भी, और वो गर्ल चाइल्ड थी तो उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था. देयर वर अ वाइड वैरायटी ऑफ रीजंस. मदर्स जो थी वो अपना ख्याल नहीं रख पाती थी, इतनी यंग उनकी एज होती थी, तो वो बच्चे का क्या ख्याल रखती. इट वाज दैट, इट वाज the story of your MD. this is what I saw in my MD. Okay. I saw all of these atrocities कि हर जगह there was a problem. It was like a vicious circle of problems. That parents को knowledge नहीं है कि खाना क्या खिलाना है बच्चे को, कि timely vaccines लगवाने हैं बच्चे को, ये उनको knowledge नहीं थी. फिर उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि टू अर्न फॉर द फैमिली इज सच अ बिग बर्डन दैट दे डोंट हैव टाइम टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड्स हेल्थ. दिस वाज अ प्रॉब्लम. द मदर्स वर रियली यंग, 18, 19. वो खुद दे वर खुद किड्स themselves, you know, how can we expect them to be able to take care of the child in a very good way? So there were a lot of problems, and as a result children were severely malnourished. And one of the consequences of this severe acute malnutrition was vitamin A deficiency. Okay. Now vitamin A is something that you and I we get from our diet. हम fruits खाते हैं, vegetable खाते हैं, हम eggs खाते हैं, butter milk खाते हैं, सब में vitamin A होता है. तो हमें और आपको और हमारी जो families के बच्चे हैं उनको diet अच्छी मिलती है तो उनको vitamin A अच्छे से मिलता है, तो उनको ये deficiency नहीं होती. लेकिन ये जो बच्चे हैं ये थोड़े थोड़े चावल पे सर्वाइव करते हैं. दे ओनली हैव फ्यू स्क्रैप्स ऑफ poor quality food to eat, and as a result the system is grossly deprived of vitamin A, and that causes changes in the eye. So what happens is that initially there will be night blindness, and if you don't treat the vitamin A deficiency it progresses to full blown irreversible blindness. आप believe नहीं करोगे, हर साल 500,000 children of this world they become completely irreversibly permanently blind because of vitamin A deficiency. So ये जब फैक्ट्स मैंने नोटिस करे तो मुझे लगा कि ये एक एरिया है जहाँ से मैं स्टार्ट कर सकती हूँ अपना जो मिशन है हेल्थ इनइक्वालिटी हटाने का. तो फिर मैंने बहुत छोटे स्केल पे स्टार्ट किया था. इट वाज जस्ट मी, मेरे थोड़े कॉलीग्स के साथ मैंने विटामिन ए बच्चों को देना शुरू किया. विटामिन ए कि अगर हम सप्लीमेंटेशन दे दें बच्चों को तो ये पूरी साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है एंड बच्चों की आई साइट प्रिजर्व हो जाती है. दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये जो बच्चे जो ब्लाइंड हो जाते हैं इनकी हाफ ऑफ दीज चिल्ड्रन विल डाई विद इन अ ईयर क्योंकि उनका सिस्टम इतना वीक होता है. सो दीज डेथ्स, दिस डिसेबिलिटी विच इज़ ब्लाइंडनेस इज़ ईजिली प्रिवेंटेबल. सो बस मेरा ये मोटिव था कि ऐसे बहुत सारे डिजीज़ेज़ हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते. ऐसी भी डिजीज़ेज़ होती हैं, कैंसर्स होते हैं जो हम नहीं ट्रीट कर सकते, बट ये एक एकदम ही प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल कंडीशन है. और अगर हम इसको भी नहीं टैकल कर रहे तो फिर इट्स अ ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस. तो बस मेरा यही मानना था कि ऐसी भी कंडीशंस हैं बच्चों के साथ जिनको हम ट्रीट नहीं कर सकते, जिनके बारे में हम कुछ इलाज नहीं कर सकते, लेकिन ये एक ऐसी कंडीशन थी जो कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल थी. एंड इफ़ वी आर नॉट ट्रीटिंग दिस, इफ़ वी आर नॉट प्रिवेंटिंग दिस हॉरिबल situation that children are becoming blind and then they are dying also, then what are we doing for the society? Right. So I just felt like this is a grossly neglected area and I should start something in this field, and that's how I started Every Infant Matters. Nice, that's an amazing job that you're doing so far. Thank you. When we talk about your study, you completed your MBBS and then MD. May I know the year that you completed? So I completed MBBS in 2014. Okay. Then I completed MD in 2019. MD in 2019. Yeah. And you started this Every Infant Matter in... I started it during my MD days in 2017 end. But at that time we were not registered, we were just doing it informally. And then we got registered as a Section 8 not-for-profit in 2019. So 2019, it's on paper. It's on you paper. started Yeah. Every Infant Matters. Okay. When you started, when we talk about any NGO, non-profit organization, Section 8 कंपनी की अगर मैं बात करूं, अगेन जब भी एक कंपनी की शुरुआत होती है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या फिर सेक्शन 8 कंपनी हो, स्टार्टिंग के टाइम काफ़ी स्ट्रगल वाले होते हैं. हाँ जी, डेफिनेटली.
We really want to listen and understand the situation and the circumstances जो आपने फेस किए ड्यूरिंग 2017 और मे बी 2019 के टाइम पे. तो देखिए, जब व्हेन यू आर अ वुमन Yeah. इन इंडियन सोसाइटी, एवरी टाइम you try to deviate from that laid out set path for you, there is a lot of resistance. There is Right. resistance from the society and there is resistance from your own family. Yes. कि why are you wasting your time, अपनी पढ़ाई पे ध्यान क्यों दो, नहीं ध्यान दे रहे हो? अपनी शादी करो, you know, all of these things. As women we have to really listen to a lot of comments which are very demotivating. So the same thing happened with me. There were a lot of people who said that you're wasting your time and what do you think, you'll become Mother Teresa someday. So these are the kind of comments that I got to hear. So that Yeah. was very demotivating to a certain extent. But then I realized that करना है तो करना है. You know, it is something that I want to do and I will not be bothered by these comments, by these by this resistance that is coming from the society, and I will just do what I need to do and let's see how it goes. So obviously when you start something there is always a very big risk of failure. I Yeah. think there is 50% risk of failure when you start True. anything. Yeah. So that risk of failure also is unnerving. It gives a lot of anxiety कि मैं इतना टाइम तो लगा रही हूँ but Yes. इसका what if there is no outcome. no outcome. Yeah. What if there is no outcome and what if there is a negative outcome? Yes. Lot of times in life when you start something you only end up getting a negative outcome. एंड ये भी हुआ काफ़ी बार, ऐसा भी हुआ कि हम एज अ नॉन प्रॉफिट किसी की हेल्प कर, शुरू में तो हम लोग वी आर ट्राइंग टू हेल्प एज मेनी पीपल एज पॉसिबल. आई वॉज वर्किंग इन अपोलो हॉस्पिटल एंड the main Apollo, sorry, the Okay. big one. And over there were many children जो pediatric ICU से discharge होते थे and उनको discharge के time मान लीजिए कोई मशीन चाहिए suction Yes. के लिए, वो उस मशीन के बिना डिस्चार्ज नहीं हो सकते, लेकिन उनके पास वो मशीन खरीदने की रिसोर्सेज नहीं क्योंकि ऑलरेडी उनका हॉस्पिटल का बिल इतना ज़्यादा है. राइट. तो ऐसी सिचुएशंस में आई यूज्ड टू बी helping them get that machine or just getting it donated or paying from my own pocket and Okay. making sure that that machine is given to the child. So a lot of times once it happens that I donated a machine and maybe a week or 10 days later there was some issue with the machine. Yeah. Now those relatives of that patient, they called me and started harassing me कि आपने हमें फर्जी मशीन दी, आपकी वजह से हमारा बच्चा और बीमार हो गया. तो ऐसी सिचुएशंस भी होती है कि आप किसी की हेल्प करने जाओ और उल्टा आपको ही यू गेट इनटू अ वेरी बिग ट्रबल इवन दो योर इंटेंशंस वाज एब्सोल्युटली प्योर एंड मशीन की गलती हुई उसमें it's not something I can control, right? It's a technical flaw and I'm sure वो 100-200 रुपए देके वो ठीक भी हो जाती, वो ठीक भी हो जाती, but it was just इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है अपनी साइकी पे. तो कभी कभी आपका मन करता है कि आप छोड़ दो ये काम. True. सेम वे इन कोविड, जब हम कोविड में जब सेकेंड वेव आई थी और वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ था कि ऑक्सीजन नहीं है, बेड्स नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं. तो फिर मैंने एक टास्क फोर्स शुरू करी थी, कोविड टास्क फोर्स, एंड उसमें हम सारे पेशेंट्स की हेल्प कर रहे थे. मेरे कुछ 165 वॉलंटियर्स थे उस ग्रुप में. 24/7 वी वर वर्किंग. किसी को बेड दिलाना, किसी को ऑक्सीजन दिलाना, किसी को वेंटिलेटर बेड चाहिए, किसी को एक्मो बेड चाहिए. उस टाइम ब्लैक फंगस आ गया था, उसकी दवाइयाँ अरेंज कराने के लिए वी वर हेल्पिंग एवरीबडी. तो उसमें भी काफ़ी बार ऐसा हुआ कि हमने किसी पेशेंट को ऑक्सीजन दिलाया या कहीं हॉस्पिटल में बेड दिलवाया, एंड उस टाइम में तो आपको पता है मोर्टेलिटी रेट कितनी हाई थी. तो अगर पेशेंट नहीं बचा तो हम पे ब्लेम आ रहा था. ऐसा भी हो रहा था. और मेरे जो वॉलंटियर्स थे वो कॉलेज के बच्चे थे. दे वर यंगस्टर्स. द यंगेस्ट वॉलंटियर वाज 15 और 13. तो उन लोगों पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा कि मैम देखिए हमने इस पेशेंट को इस हॉस्पिटल भेजा था और उनकी डेथ हो गई. तो आई हैड टू रियली एक्सप्लेन टू देम कि सी इट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल. आपने इन अ वे उस पेशेंट को एक फाइटिंग चांस दिया. अगर आप बेड नहीं दिलवाते तो वो पेशेंट वैसे भी उनका फाइटिंग चांस ही नहीं था. आपने बेड दिलवाया, आपकी वजह से उनका इलाज हुआ. लेकिन ये डिजीज ही ऐसा है कि इसमें इतनी हाई मोर्टेलिटी जा रही है. राइट. अब डॉक्टर बत्रा, व्हेन वी टॉक अबाउट स्टार्टिंग एन एनजीओ, जब भी हम एक एनजीओ की शुरुआत करते हैं तो डेफिनेटली वी आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ फंड सो फार. इनिशियल फेज पे फंड नहीं होता. In terms of manpower की अगर मैं बात करूँ, getting people from the market for NGO, especially
आप जिस टाइम की बात कर रहे हैं, कोविड टाइम इज रियली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उस टाइम पे लोग घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहते हैं। अब आपने उस पीक टाइम पे इसकी शुरुआत करी, 2019 के टाइम पे आपने इसकी शुरुआत करी, देन 20 एंड 21 वो हमारा पीक टाइम था कोविड का इंडिया में। हाउ डिड यू मैनेज बोथ, लाइक मैनेजिंग द मैन पावर एंड मैनेजिंग द फंड? हाउ यू टैकल दैट सिचुएशन? सो फंडिंग की अगर मैं बात करूं तो हमारा एक टाई अप हो गया था एक अमेरिकन एनजीओ के साथ, जो हमें मेडिसिन डोनेट कर रहे थे इन काइंड. So initially a lot of our expenses were elevated because we were getting the medicines from this American NGO called Vitamin Angels. So that was a very big support to us. And in terms of hard cash, I think we put in a lot of our own money in the beginning phases. I think everybody, when you start a venture, you have to put in your own money. And there were a few generous donors. You know, जैसे मैं आपको ये मशीन का बता रही हूँ, जब मैंने बताया कि ऐसे बच्चा है, उनको ज़रूरत है, तो people do come forward. इस दुनिया में लोग करना चाहते हैं चैरिटी, लेकिन उनको पता नहीं होता कि कहाँ करें. तो अगर जैसे बीइंग अ डॉक्टर, दे न्यू कि मैं सही जगह दूंगी, उनका जो फंड्स है दे विल नॉट बी मिसयूटिलाइज्ड. सो दैट वे आई वाज एबल टू गार्नर द ट्रस्ट ऑफ मेनी इंडिविजुअल डोनर्स इन द बिगिनिंग, एंड दैट्स हाउ वी गॉट अ पुश. When COVID started, we realized that India is really suffering under COVID. And as a non-profit and as like I would try to say a humanist in general, if I don't try to help the country in this time of the worst crisis which has been there in the last 100 years, then I am a failure. So I wanted to help in COVID. एंड आई स्टार्टेड इन 2020. जब मार्च में नया कोविड आया था, तो जो स्लम्स में लोग थे उनके पास मास्क नहीं थे, उनके पास सैनिटाइजर्स नहीं थे. तो हमने बहुत स्मॉल स्केल पे एक क्राउड फंडिंग किया एंड वी अरेंज्ड मास्क एंड सैनिटाइजर्स फॉर स्लम ड्वेलर्स, ताकि हम अपने लेवल पे कुछ तो करें ताकि कोविड का स्प्रेड रुके. व्हेन वी स्टार्टेड विद कोविड रिलीफ, we realized कि इस टाइम पे जो है corporates, they want to donate for COVID relief. And we took COVID relief to another level. We took it to a level where we were donating PPE for health workers in all the major government hospitals. Upsilon, मुंबई में, दिल्ली के सफदरजंग में, हर जगह PPE की शॉर्टेज थी. हमने बहुत ज़्यादा PPE डोनेट किए उस टाइम पे. फिर हमने कोविड सेंटर्स बनाए नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ हॉस्पिटल, जिन एरियाज में नियरेस्ट हॉस्पिटल इज 100 किलोमीटर्स अवे, वी क्रिएटेड कोविड सेंटर्स ओवर देयर. वहाँ पे वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी. वहाँ डॉक्टर्स तो है नहीं, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटर्स भेजे ऑक्सीजन के लिए. वहाँ पे ट्रेनिंग दी कि कैसे कोविड के केसेस मैनेज करने हैं, कैसे उनको रेफर करना है आगे, क्योंकि बर्डन इतना ज़्यादा था. तो वी डिड सो मच कोविड रिलीफ दैट वी स्टार्टेड गेटिंग CSR funding for COVID, specifically for COVID relief. So that way we got, I think, a lot of visibility because of our work in COVID. So that's, you know, when you try to do something, one thing leads to the other. There's always a ripple effect. My effort in COVID relief led to the ripple effect of me having visibility in the CSR world. Right, and our COVID relief was recognized even by the World Economic Forum. We were labeled as one of the top 50 non-profits in the world tackling COVID. So that way we did, you know, we really got involved in COVID in a major way, and that gave us visibility in the CSR world. And once we got the visibility, we got that stamp of approval that, you know, these people are doing genuine work. They are not frittering away funds, they are not wasting the money of the donor. Then donations started coming in through corporates, through individuals, through smaller smaller business owners, whoever wanted to give CSR, whoever we could connect with, started approaching us to give their CSR. Right. When we are talking about COVID time and the COVID duration, this is one of the tough time that we all have seen so far. अभी तक के टाइम पे हम सब ने इससे ज़्यादा टफ टाइम नहीं देखा अपने टाइम में, अपने ड्यूरेशन में. When you talk about charity work that you are doing under Every Infant Matters, आपने बहुत काम करे उस टाइम पे. Did you get infected उस टाइम पे? Yeah. COVID? So I was also working at the hospital. तो मुझे तो आई थिंक 2020 से लेके आज तक मुझे 5 बार कोविड हो चुका है. 5 times. 2020 में आई गॉट सेव्ड, 2021 में आई गॉट कोविड,
in the second wave. And that was in fact what happened was that obviously I got it from the hospital. Yeah. And वहाँ उस टाइम पे 2 weeks का वो था पीरियड हमें मिलता था कि आप 2 weeks तक नहीं आ सकते काम पे अगर आपको कोविड पॉजिटिव है तो. Yeah. And then when I was in that 2-week period, I was feeling very helpless. कि मेरी जो फ्रेटर्निटी है वो लिटरली अपनी जान पे खेल के दे आर हेल्पिंग पेशेंट्स एंड आई एम स्टक हियर नॉट एबल टू. देयर वाज अ पीक, आई थिंक इट वाज 10th April जब मुझे कोविड डायग्नोज हुआ था. वो पीक का टाइम था. एंड उस टाइम पे उसी टाइम पे मैंने वो कोविड टास्क फोर्स स्टार्ट करी थी. एंड मैं 24/7 आई यूज्ड टू बी इन दैट WhatsApp all the time. It was a WhatsApp group of 165 volunteers. We used to find, like, my volunteers used to check Twitter. कोई जर्मनी से लेडी वॉज ट्वीटिंग कि मेरे पेरेंट्स घर में अकेले हैं दिल्ली में, मैं यहाँ जर्मनी में हूँ, उनको बेड की ज़रूरत है. तो उनके लिए तक मतलब पीपल यूज टू फाइंड रिक्वेस्ट्स एंड वी यूज टू अरेंज बेड्स, ऑक्सीजन लीड्स देना उनको, प्लाज्मा, उस टाइम पे प्लाज्मा चल रहा था, प्लाज्मा कनेक्ट करवाना, बहुत वी वर जस्ट वर्किंग राउंड द क्लॉक. इनफैक्ट एक बार ऐसा हुआ कि मेरी मॉम ने मेरा फ़ोन ले लिया कि तुम 3 दिन से सोई नहीं हो, तुम्हें इतना हाई फीवर है, तो यू बेटर स्टॉप दिस वर्क राइट नाउ. एंड एक बार ऐसा हुआ कि मेरा फ़ोन ही क्रैश हो गया. इतना लोड आया उसमें. वो उस टाइम पे आई हैड दिस आईफोन जिसमें कि स्टोरेज इशू था, तो वो इतने सारे वो मैसेजेस हो गए कि वो क्रैश हो गया. I still remember those days. मैं भी I was a part of some group. हाँ. तो मुझे याद है अभी भी वो टाइम की एक दिन में कितने मैसेजेस आते थे. एंड उस टाइम पे जस्ट बिकॉज ऑफ you, or I could say the people like you, जिन लोगों ने बहुत एक इम्पैक्ट लाया मार्केट में और बहुत आगे बढ़ के उन्होंने काम किया. एंड डेफिनेटली हमने बहुत से लोगों की जान बचाई है अपने इस छोटे एफर्ट. सिर्फ जान बचाने की भी बात नहीं है. एक मैं आपको एग्जांपल शेयर करूंगी. क्रिमेशन के लिए उस टाइम कोई नहीं था, क्योंकि जो जैसे NRIs जो हैं उनके पेरेंट्स यहाँ थे. देयर वाज वन लेडी जो फिलीपींस में, शी वाज स्टक, बोथ द पेरेंट्स डाइड ऑफ कोविड एंड देयर वाज नो वन टू डू द डोनेशन, टू डू द क्रिमेशन. वी सेंट अ वॉलंटियर टू डू द क्रिमेशन एंड इट वाज सो अनफॉर्चुनेट दैट ही वाज नॉट अलाउड टू डू द क्रिमेशन बिकॉज ही वाज अ मुस्लिम एंड द फैमिली वाज हिंदू. सो हमें रियली इन सब चीज़ों को साइड रख के अगर हम सोचते ना उस टाइम पे, तो आई स्टिल फील दैट दिस एफर्ट वुड हैव बीन मच स्ट्रॉन्गर. इस सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली ये जो भेदभाव होता है रिलीजन के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, ये सब असाइड रख के हमें ह्यूमैनिटी के बेसिस पे अपनी थॉट प्रोसेस रखनी चाहिए हमेशा. नॉट जस्ट इन अ टाइम ऑफ क्राइसिस, स्पेशली इन अ टाइम ऑफ क्राइसिस, बट all the time. If we can put aside these differences and like I said, Vasudev Kutumbakam, the world is one family. What is happening, what happened in Italy in 2020 happened in India in 2021, and had we learned from that situation, maybe our situation would be more, we would be more equipped to handle the kind of crisis that we were in. So it's always sitting in India we cannot think कि अफ्रीका में जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी वो हमारी प्रॉब्लम बन जाएगी. the world is fully connected. and शुरू में तो हमें ये भी लगा था कि कोविड चाइना की प्रॉब्लम है. हमें ये नहीं लगा था कि कोविड हमारे पास कभी आएगा. हमें लगा था कि जैसे पहले काफ़ी वायरसेस आए, चाइना से ही ख़त्म होके चले गए, ये भी वैसा ही होगा. या एबोला है, वो अफ्रीका में आया, वहीं से चला गया. तो global pandemic was one situation which I think made everybody realize that the world is indeed one family. जो यहाँ हो रहा है वही हज़ारों किलोमीटर दूर भी वही सिचुएशन है. इंसान ultimately it's just human beings. Right. आपने जब से शुरुआत करी, the time when you started your NGO till 2024, it's been almost like 5 years of journey. Every person is having up and down times in business, or even in your terms, if I could say, NGO के काम में, and that too related to healthcare industry. No doubt ये बहुत ही hard work रहा होगा. Is there any time जब आपको ऐसा feel हुआ कि that's all, now I want to quit, और ठीक है मेरे से नहीं हो रहा, अब बहुत ज़्यादा हुआ. Like you shared some stories कि काफ़ी struggle रहे, you're doing something for good, but still you're getting some bad responses. So is there any time जब आपने बहुत, I could say कि frustration बहुत ऊपर थी, या आपको लगा नहीं ठीक है that's all, I need to quit now? एक्चुअली आई वुड थिंक कि लो फेज तो बहुत आए, बट कभी ये ब्रेक पॉइंट आया नहीं, क्योंकि जो हम काम करते हैं उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है.
आप ये देखिए ना, 1 person टेलिंग मी कि आपकी वजह से, आपने जो ऑक्सीजन दिलवाया था उस वजह से माई मदर इज अलाइव टुडे, Right. वर्सेस 10 people टेलिंग मी कि आपकी वजह से ये खराब हो गई चीज़. True. तो दैट वन good feeling is Feedback enough is to enough. battle the Exactly. 10 bad feelings. Same with vitamin A, you know, जब हम देखते हैं कि almost अब 5 lakh children को we have been able to give vitamin A Wow. in the country and even in Africa. तो अगर मैं ये सोचूं कि 5 लाख ऐसे बच्चे हैं जो who were saved from this horrendous life of blindness, of disability and untimely death because of an effort that me and a few others created, then that impact is the thing that motivates me कि भाई कुछ भी हो, कितनी भी सुनना पड़े, कुछ भी you know, Show must go on. the show must go. Right, you're right. That's really a motivating story, I could say. इतने downtime, especially in terms of healthcare industry, where life, risk, everything is concerned, and whatever you do, आप हमेशा आपके पास अच्छे फीडबैक नहीं आ सकते Right. in terms of you're a doctor. आप एक डॉक्टर होके भी you can give you 100% to save anyone's life, but still there are some possibility and Right. चीज़ें हो Right. सकती हैं. सो हेल्थ केयर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे 100% तो किसी चीज़ के लिए भी हम नहीं कह सकते, बट आपने बहुत अप एंड डाउन्स देखे एंड द वे यू आर वर्किंग, आपने इंडिया को रिप्रेजेंट करा है इंडिया से बाहर, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और आप बहुत कम टाइम में आपने लाइक 5 lakhs योर काउंटिंग जिनको आपने विटामिन ए प्रोवाइड कराया अब तक. अभी मैंने बीच में आपकी एक पोस्ट देखी थी, शायद वो लद्दाख या कहीं की थी, कारगिल. उसकी क्या स्टोरी है? कारगिल की स्टोरी ये है दैट सी एज एन इंडियन कारगिल इज समथिंग विच इज क्लोज टू ऑल ऑफ आवर हार्ट्स बिकॉज you know that war happened in Kargil. True. So many of our countrymen lost their lives and ultimately we were victorious. We you know, we were able to save our country's pride. True. So Kargil is one such area which is surrounded by mountains and snow. True. and वहाँ पे जो है हेल्थ केयर एक्सेस थोड़ा पुअर है. वहाँ पे ऐसे भी एक बेल्ट है विलेजेस की जहाँ पे आपको बाय फुट आप एक जगह पार्क करके काफ़ी किलोमीटर ऊपर अपहिल जाना पड़ता है, फिर आप वो बेल्ट पे पहुंचते हैं. नो को वहाँ पे कम्यूट का कोई कम्यूट का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है. तो ऐसे भी वहाँ विलेजेस हैं. वहाँ जो जोग्राफी है वो बहुत ख़राब है. द टेरेन इज़ बैड, इट्स वेरी कोल्ड, राइट. सो ऑल ऑफ दीज बैरियर्स मेक इट एन एरिया विच हैज़ डिफ़िकल्टी इन एक्सेसिंग हेल्थ केयर. सो वी रियलाइज दैट हम दिल्ली में, लखनऊ में, ऐसे सिटीज़ में तो हम काम कर ही रहे हैं, बट अगर हम ये अनरीचेबल वाले एरियाज़ को नहीं रीच करते तो हमारा वर्क इज़ इनकम्प्लीट. एंड इवन दो आई वुड से द पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन इज़ लो देयर. Our target group is 0 to 5. There are less children as compared to the big cities. But do these children deserve to be ignored? Is my question to you. And these are also the areas where food is scarce because it's so cold कि खाना कम मिलता है और मैल न्यूट्रिशन ज़्यादा है. तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे विटामिन ए की ज़रूरत है और भी हेल्थ प्रोग्राम्स की ज़रूरत है. जैसे हम सिर्फ विटामिन ही नहीं देते वहाँ, हम वहाँ पे जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनको हम अपस्किलिंग करते हैं, उनकी हम अपस्किलिंग करते हैं ताकि जो वहाँ की पेशेंट लोड है उनकी केयर बेटर हो पाए. वहाँ पे डॉक्टर्स कम होते हैं, स्पेशलिस्ट तो बहुत ही कम होते हैं. जो डॉक्टर्स हैं उनको भी अब हम ट्रेन करना शुरू करेंगे स्पेशलाइज्ड केयर में. जैसे कि हम जो कॉमन डिजीजेज हैं, लाइफस्टाइल, इवन एडल्ट्स के, नॉट जस्ट चिल्ड्रन, डायबिटीज़ हो गई, थायराइड हो गया, उनको कैसे मैनेज करना है, ब्लड प्रेशर हो गया, कैसे मैनेज करना है, इन चीज़ों की अपस्किलिंग हम वहाँ के डॉक्टर्स को भी देंगे. तो आर अलाइनिंग विद आर मिशन ऑफ giving, creating a world which is where health is accessible to all. We are doing these trainings. We are even training the ANMs in ANM is auxiliary nurse midwife. It's a government health worker entity which takes care of a lot of health services in areas where doctors are little scarce. So ANMs की भी हम upskilling करते हैं, सिक्किम में करते हैं इस समय. Just to cut it down, or maybe in short terms, I want to explain it with my audience. Every Infant Matters अभी as a NGO country के लिए क्या क्या चीज़ें provide कर रही हैं?
कंट्री के लिए देखिए हमारा जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, हम विटामिन ए देते हैं टू चिल्ड्रन ऑफ 0 to 5 years of age group to prevent them from irreversible blindness that happens because of vitamin A deficiency. That is our flagship project. Now when we are giving vitamin A, there are so many, like I think 90% of the children have worms in their stomach, Yeah. right? That will get absorbed by the worms. Exactly, yeah. So it makes sense to give deworming tablet along with the vitamin A. That is the second thing we provide. We give deworming tablets. Then what we do is that there are areas where children don't have clean water to drink. अगर आप देखो तो जहाँ अगर पानी बच्चे नहीं सही पियेंगे तो उनकी हेल्थ कभी अच्छी नहीं होगी, True. right? They will be predisposed to waterborne infections. So we, in certain areas, we are doing rainwater harvesting to provide clean water to families. We've installed rainwater harvesting units, and these are the areas जहाँ पे women had to walk for miles with those pots to get water, right? So the idea being कि without clean water we can't have good health. So, and this is something we are doing at the intersection of health and climate change, because climate change की वजह से the water scarcity is there, Right. and we are trying to, and all the SDGs, if you see, they are linked. So climate change and health are very, very closely linked. So this is what we're doing at the intersection of health and climate change. Aside from that, we are doing training. Okay. Training यानी कि upskilling of health workers, Okay. upskilling of doctors in remote areas, so that That they you're are doing online or offline? so both. So we Both do ways. in Sikkim we are doing online. In Kargil we are going to start with offline training now. Okay. Then we're just waiting for the elections to get over, and then we are going to be sending our teams, our doctors, our specialists to do the training offline in Kargil. Okay. So that is another thing we're doing, upskilling of health workers everywhere. COVID relief, of course, it's not needed anymore, luckily, but we're not doing it. But we did a lot of work in COVID relief, like I said. I think that's about it for now. And another thing we're doing is, there is a project going on which detects asthma in slum children. Okay. Because asthma is also one of the major prevalent factors, and it's very closely linked to malnutrition. अगर asthma severe है तो बच्चे की growth नहीं होती, right? वो nutrients absorb नहीं हो पाते ढंग से. So there are a lot of things we're doing, but primarily our focus is कि हम इस vitamin A deficiency को जड़ से हटाना चाहते हैं. Okay. So major is vitamin A Yeah. that you are Yeah. actually targeting. It's a diversified work that you are doing under one platform, that is Every Infant Matters. Right. My question is, आने वाले 5 years or maybe 10 years में, how you are planning to execute it on proper way? What are your plans? आप टीम बनाने वाले हो स्टेट में, या क्या आपने प्लान किया हुआ है इसको एग्जीक्यूट करने के? देखिए हमने प्लान यही किया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कवर करें इस कंट्री में, एंड हमारा एक प्रोजेक्ट फिलीपींस में भी चल रहा है सेम विटामिन ए का. कितनी कंट्रीज को भी आप अगर मैं फ्रॉम द बिगिनिंग टू अभी का अंत तक देखूं तो वी हैव कवर्ड इंडिया, नाइजीरिया, then Philippines, and in Kenya and Dominican Republic we had done COVID relief. Wow. So total of 5 countries Five we have countries. had a presence. I will not say that the presence is there currently, because in African countries it's difficult to work. Right. There is a lot of political Formalities red and- tape right. involved, and Right. the work which was happening, it's been temporarily shut down, but we are hoping to start it again. So this is what we've done in different countries, and our goal is to reach as many children as possible with vitamin A, and we want to make sure that this number, this 500,000 children who become blind, 500,000 is a huge number. It could be the population of a small city. So if Yeah. you can close your eyes and you can imagine a small city full of blind people. That is the magnitude of this problem. So I want to cut it down to as much as possible, and preferably, like the world is free of smallpox today, hopefully the one day the world will be free of vitamin A blindness. Definitely. Yeah. And the way you are working, Yeah, कि इसे जड़ से हटाना है, हाँ. I'm damn sure one day will come. I hope so. अब आपने अभी बात की, you already served with the area of Kargil and Sikkim. Right. अनडिजर्व्ड एरिया की अगर मैं बात करूं, व्हाट आर द बेसिक चैलेंज और द मेजर चैलेंज In underserved areas. या उसमें क्या आपने face देखिए यहाँ मैन पावर का इशू आता है for sure, because they are sparsely populated, Right. these areas. Right.
also the geography and the terrain and the climate is not very good for productivity in general, so that is an issue. Then I think the kind of socio-cultural norms that people follow are different in different cultural groups. Like there are tribes that we work with in Musahar tribe in Uttar Pradesh, Mirzapur side. So they are very culturally isolated from the rest of the world, and they will not understand if we tell them कि ये दवाई क्यों ज़रूरी है. True. Right? तो ऐसे में हमें इनसाइडर वो चाहिए होता है कोई कि हम उसी ट्राइब के या उसी एरिया के अंदर से इफ वी कैन हायर एंड ट्रेन समवन टू डिलीवर द प्रोजेक्ट एज अ हेल्थ वर्कर, देन दैट इज व्हाट वर्क्स बिकॉज दैट पर्सन स्पीक्स द सेम लैंग्वेज, दैट पर्सन इज one of them and he is delivering a message of good health as opposed to it coming from someone like me who is in Delhi, who doesn't speak the language, doesn't wear their clothes, doesn't follow their religious practices. तो ऐसे भी रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं जो वैक्सीनेशन नहीं अलाउ करते या दवाइयाँ नहीं, एलोपैथी अलाउ ही नहीं करते, तो उनमें रीच करना मुश्किल हो जाती है. What role education plays in your field? If I talk about doing the charity and working under Every Infant Matters, आपको क्या लगता है एजुकेशन का कितना बड़ा हाथ है इसमें? आई थिंक एजुकेशन का तो सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर मुझे नॉलेज नहीं है किसी प्रॉब्लम की और उस प्रॉब्लम की इन डेप्थ में जाने की वो इंसाइट नहीं है, तो फिर वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं नहीं ढूंढ सकती. तो एजुकेशन एम्पावर्स अस विद स्किल्स टू फाइंड सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस वर्ल्ड. दैट इज़ व्हाट आई थिंक. एंड एज अ डॉक्टर माय education is only in health, right? I don't have a background of finance or marketing or HR or anything. I just know medicine, and with my knowledge of medicine and with my knowledge of with my, I would say, general knowledge of the world and its working and general knowledge of human behavior, we have been able to come up with sustainable solutions to these problems. Right. अब मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आपसे, एंड आई बिलीव दिस इज़ आपकी लाइफ से भी बहुत इम्पॉर्टेंट जर्नी होगी इसकी, और आपके लिए एक मेमोरेबल जर्नी होगी सो फार. लिंक्डइन पे आपकी एक पोस्ट देखी है, आई गेस आपके पीछे आपकी प्रोफाइल के पीछे लगा हुआ है, एंड यू आर हैविंग अ पिक्चर विद बिल गेट्स. तो बिल गेट्स के साथ पिक्चर होना, इट्स अ ड्रीम फॉर, आई कुड से आज के टाइम पे वर्ल्ड में लोगों की एक ड्रीम है कि मैं उनसे मिल पाऊँ. फोटो एंड क्लिक करवाना एंड अवार्ड लेना इज समथिंग डिफरेंट. तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो आपने अचीव किया है. वी रियली वांट टू अंडरस्टैंड दैट फीलिंग दैट यू गॉट अवार्डेड एज द ग्लोबल अवार्ड दैट यू गॉट फ्रॉम गोलकीपर्स. बिल गेट्स फाउंडेशन से आपने उठाया. हाउ वाज दैट फीलिंग? So it was, I was very happy for the work, like more than for myself. I was happy that this will give me so much visibility, and it is a very big stamp of approval कि ये लोग कुछ सही कर रहे हैं. आप समझ रहे हैं? अल्टीमेटली बिल गेट्स के साथ फोटो होना या अवार्ड मिलना, एंड वही अवार्ड मिलना जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी मिला है. तो ये जो डोनर्स को एक मैसेज पहुंचाता है कि ये सही काम कर रहे हैं. बिल्कुल. अल्टीमेटली इट ट्रांसलेट्स इनटू फंडिंग विच ट्रांसलेट्स इनटू अस रीचिंग मोर एंड मोर चिल्ड्रन एंड बेनिफिशरीज. तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि हमें इस अवार्ड से काफ़ी विजिबिलिटी, काफ़ी वो मिलेगा, अप्रूवल मिलेगा पूरी वर्ल्ड की एजेंसीज़ का, एंड होपफुली हम बहुत सारे और बच्चों की मदद कर पाएंगे इस अवार्ड के माध्यम से. This is my feeling behind any award, any achievement. Even this podcast that I'm sitting here today, it makes me happy that so many people are listening to my voice. And it will ultimately, I don't know, what will happen as a result of this podcast. But even if one person reaches out and says that, ma'am, we want to intern with you or we want to work with you, it will be a great, achievement for me. Exactly. Yeah. When we talk about achievement, what are the biggest achievement that you got so far? I think the biggest achievement is this number. 5 lakhs is the big number, That is the biggest and that is the biggest achievement. And
us being able to train a lot of health workers in the country who are in turn able to care for patients of this country better. Yeah. I think that feeling is also a very big achievement. See, like I said, my education is in medicine, and True. I have done masters in pediatrics. Then I have done super speciality in neonatology, that is Yeah. study of the very small babies. And babies की care तो आपको पता है थोड़ी अलग होती है, Right. right? तो मैं और एंड देन आई हैव डन अ कोर्स इन पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन ऑल्सो. तो मैं ये जो मेरे सारे स्किल्स हैं, अगर मैं जो ANMs हैं, आशाज हैं, या इवन MBBS डॉक्टर्स हैं, उनको इम्पार्ट कर पाऊँ, एंड एज अ रिज़ल्ट वो पेशेंट्स की केयर अच्छे से कर पाएँ, जो कि जिनको अदरवाइज इस नॉलेज की एक्सेस नहीं होती कि उनको अपने न्यूबॉर्न की केयर कैसे करनी है इन द बेस्ट वे पॉसिबल. तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है. आप फोर्ब्स की मैं बात करूं फिर से अब बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अचीवमेंट्स, यू गॉट अवार्ड्स, यू हैव, आपने तो काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स लिए हुए हैं, बट मैं कुछ गिने एक दो के बारे में बात करना चाहूँगा. सो फोर्ब्स 30 अंडर 30 अगेन आपने बहुत आई कुड से कि इट्स अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट दैट पीपल ड्रीम अबाउट. सो फोर्ब्स के अंदर फीचर होना एंड दैट टू 30 अंडर 30, रीज़न बिहाइंड इट and reason से भी ज़्यादा how you felt and how they reached to you. सो फोर्ब्स जो है उनका नॉमिनेशन फॉर्म निकलता है हर साल, एंड वन ऑफ माय फ्रेंड्स हैड नॉमिनेटेड मी, सीइंग दैट आई एम डूइंग सम गुड वर्क फॉर द सोसाइटी. सो मेरे को ऐसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था दैट माय नेम विल बी सिलेक्टेड, बिकॉज इट वाज फोर्ब्स एशिया, एंड एशिया में आई एम श्योर देयर वुड बी लैक्स ऑफ applicants to that situation. And then I think it was in 2020, it was middle of the pandemic, one of my friends called me early in the morning, do you know your name is there? I said, what? And I just didn't believe it, because I'm like, don't kid with, don't joke with me. And then I saw, and it was actually there. So it was a very good feeling and that was one of my first recognitions. So again, like I said, I just felt happy कि जो काम है उसको विजिबिलिटी मिल रही है, राइट. क्योंकि जब लोग देखते हैं कि एक नॉन प्रॉफिट का नाम फोर्ब्स अंडर 30 लिस्ट में है, तो नेचुरली उनकी नज़र जाएगी, वेबसाइट खोलेंगे, वो देखेंगे क्या काम हो रहा है, हो सकता है उनका इंटरेस्ट बिल्डअप हो सकता है वो आगे 4 लोगों को बताएं कि ऐसे भी एक, हाँ, देयर इज ऑल्सो अ नॉन प्रॉफिट हु इज वर्किंग इन विटामिन ए, व्हाई डोंट वी कोलैबोरेट विद देम, रीच आउट विद देम. सो networking is a very big part of this non-profit world. True. You meet someone, like I met you today, so you might be telling your employees, your co-founders that there is a non-profit like this, and the word spreads. That's how the word spreads, and that's how you gain visibility, and that's how ultimately that translates into you being able to help many more people. True. Running an running an NGO, that too different countries. अगर मैं सिर्फ इंडिया की भी बात करूँ, इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स दैट यू आर ट्राइंग टू कवर, आपने कभी ऐसा फील किया कि एक रूरल एरिया में पीपल डोंट अंडरस्टैंड अबाउट योर एनजीओ, वो नहीं समझ पाते कि आप क्या कर रहे हो? हाँ, वो नहीं समझ पाते, ये बहुत कॉमन चीज़ है. देखिए, विटामिन ए की ड्रॉप्स होती हैं, तो ड्रॉप्स थोड़ी कड़वी भी होती हैं, एंड काफ़ी बार बच्चे पीते ही उसको उल्टी भी कर देते हैं. So there has been an instance where some of the villagers have said that this non-profit is giving poison. ये जहर पिला रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चे को इससे वॉमिट हो गया. तो ऐसे भी इंस्टेंसेस हुए हैं जब हमारे इंटेंशन को बहुत गलत समझा गया है, एंड इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझा गया. तो ऐसे में हम यही ट्राई करते हैं कि जो लोकल्स हैं, जो मान लीजिए किसी विलेज के पंचायत हेड है या कोई रिलीजियस लीडर है, उनके साथ मिलके ये मैसेज पब्लिक को पहुंचाएं ताकि वो बेटर एक्सेप्टेड हो एज कंपेयर टू स्ट्रेंजर्स फ्रॉम अ फॉरेन लैंड. ओके. एवरी इन्फेंट मैटर्स के अभी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल क्या हैं? देखिए, शॉर्ट टर्म गोल्स वही हैं कि हमें जहाँ तक हो सके अपने काम को स्केल करना है. We want to reach as many children as possible. We want to try and restart the work in Nigeria, and we want to make sure that as many children as possible are covered. And I think for long term, we want to build a technology platform as well,
because we want to be thorough with how many doses. So we're supposed to give 2 doses minimum of vitamin A 6 months apart. So to track those 2 doses is a task, and if we can have a compliance app to do the tracking, that would be great. And technology is always an enabler for scaling. It's an enabler for monitoring and evaluation. So if we can include a technology aspect to the non-profit, that will be great. So we're working on these things. So let's see. Okay. Are there any upcoming projects that you're excited about? I think I'm very excited about Kargil. I think what we start in Kargil can really have a ripple effect to the rest Yeah. of the country, and if we can make sure that the training is of health workers is done in all the remote areas where specialists are not available, I think that will be great. And even covering a lot of remote areas in terms of vitamin A would be ideal. So Kargil, of course, has been going on for a year or so, but this next second phase of Kargil is just starting. So we're excited So about कारगिल that. में काम करने की शुरुआत आपने कब की? 1 साल हो गया. एक साल से you're working for that yeah, area. yeah. Wow. Okay, next question that I have is, how do you plan to expand your reach to infants? Because India के अंदर काफ़ी infants हैं. How you're trying to reach them? तो हमारे 2 मॉडल्स हैं. एक तो मॉडल है कि हम गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, और गवर्नमेंट का आउटरीच ट्रमेंडस है. गवर्नमेंट के हेल्थ वर्कर्स हर एरिया में हैं, गवर्नमेंट के PHCs हर जगह हैं. True. तो गवर्नमेंट के साथ काम करके गवर्नमेंट के आशा वर्कर्स को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देके उनको विटामिन ए उनसे विटामिन ए दिलवाना, वो एक माध्यम है. दूसरा है कि हम अपने हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन करते हैं, अपने टीम्स बनाते हैं, उनको फिर इम्प्लीमेंटेशन उनसे कराते हैं. सो ये these are the two ways that we work, and both ways are extremely successful. And then in the future we want to have more fruitful collaborations with the government, because the kind of outreach that they have, nobody has. Exactly. Yeah. अभी के टाइम पे we have really good government और काफ़ी supportive हैं. What kind of support that you got for every infant matters from the government? From the government. Yeah. So the government has been very supportive. We have been able to deliver our projects through the government's workers. In COVID, the government was supportive in taking in using our expertise to co-create centers, or in when we donated PPEs and everything to the government hospitals. The government has always been supportive and helpful that way. And how do you reach, suppose if you're running an NGO and if you want to reach government for any kind of support? So we reach out to the CMO. CMO, okay. CMO or DM of a district, but mostly the medical side of things is where the process starts, right? So the chief medical officer of the area, and then we go through. That is the them. way Yeah. you're reaching out, Yeah. okay. How can any individual, or I could say any company, organization can contribute in Every Infant Matters if they want to contribute? Suppose if my audience, if they want to contribute, how they can? So for your audience, I just like to say that everybody has a skill set. Like I said, my skill set is in medicine, but my skill set is lacking in, say, social media, in tech. So everybody's skills, when they come together and we work as a team, the results are tremendous. So you don't have to be necessarily from the healthcare space. You can be making good videos, or you can be good at social media, and you could tell me that we want to help you out, and I would be more than happy to get as much help as I can from any person from any kind of background, because there's always something to do, and there's always something to contribute with your own skill set, right? So that is for individuals. And for companies, of course, all companies have a CSR budget. Yes. So if anybody understands that we are doing genuine work, and I assure you that we are. I know everybody would say that, but Yeah. we have a bunch of CSR partners. We have the Great Eastern Shipping Company, we have DuPont, Celanese, Titan has been a partner, Sharp is a partner, Pernod Ricard has been a partner. So we've had a couple of big CSR partners, and do have
certain on board. So if companies want to reach out to us, I can assure you that their funds will be put to the best utilization possible, and we'll be very, like, we are usually very thorough with whatever reports we give back to the donors, and due diligence is done in a very systematic and a very proper manner. Okay. So this is how. Dr. Batra, tell me about the TEDx experience. Oh, TEDx experience. I believe 2 times you have I delivered have, speech, I've right? spoken at TEDx twice. I've given 2 TEDx talks. One was in the pandemic, so that was online. And the second one was at TEDx Gateway in Mumbai. So that is, I think that's the biggest TEDx conference in India. Okay. And that was a fantastic experience, not just for my own speaking, but the kind of speakers that you meet. You know, Yeah. everybody you meet has something to teach you. Exactly. तो लोगों से सीख के, लोगों की टॉक सुन के, उनकी बातें सुन के, उनके एक्सपीरियंसेस सुन के बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इस वर्ल्ड में जो ह्यूमन माइंड है उसकी कोई सीमा नहीं है. लाइक देयर इज़ नो, एब्सोल्युटली नो लिमिट टू द kind of wonders that a human mind can create, be it artificial intelligence, be it a non-profit, be it there is at the TEDx where I spoke, there was another speaker who was making robots which do jobs which are too dangerous for humans to do, like manual scavenging. Wow. I still remember, I think his name is Rashid, and he makes robots that do that manual scavenging work. And he spoke about how जो humans वो काम करते हैं, उनकी क्या life होती है, कैसे उनके बच्चे डरे हुए रहते हैं कि पापा शाम में घर आएंगे कि नहीं आएंगे. And he's created robots to do the same job. Wow. So things like that. Then there was another speaker who spoke about prison reform. His project is called Project Second Chance. और जो prisoners निकलते हैं उनकी वो अपनी, they have done their sentence, but their life is nothing because they have that label of being a convict. So how he rehabilitates their lives, it was just very, very inspiring. When we talk about TEDx, I believe India के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं, they are really good speaker, they are doing good work, at the same time they have story, but they are not getting the platform. Right. Like you reached TEDx, we want to understand, we want to convey this message to our audience. What are the way that if a person is capable and if he's having all the expertise to perform on the platform of TEDx, what are the essential steps that he need to do? So one way to do it is, there is a concept called TED Fellows. So every year TED, like not TEDx but TED, the actual TED, they launch a cohort of fellows, TED What fellows. What is the difference between TED and TEDx? TEDx is independently organized TED events, and TED is like the actual TED conference, right? So they both, of course, under the same banner, but TED is supposed to be more prestigious and more difficult to, get there. So TED Fellows is a cohort which is selected every year, and you can apply online. And if you're anybody with an idea, and whether or not you've executed that idea, you're eligible for TED Fellows. So it's worthwhile applying, and if you get selected, they invite you for the TED conference in Canada, and you have to give a TED talk over there. So in Canada? I think so, yeah. I'm not sure that it's in Canada or where. It's somewhere in the world, but it's a very prestigious fellowship, the TED Fellowship. So if you do have an idea, then you can Google TED Fellows and apply for that. That is one way. And secondly, I think, these days a lot of universities themselves are having TED events. So I'm not sure what is the means to reach out to them, but I'm sure if someone really does want to do it, you can get in touch with the organizers if you know of any, and go ahead with that. When we talk about organizers, are we talking about the PR or? No, so TED conference. TED is having the different. TEDx is being organized these days almost in every university, in some schools, in different cities, under different banners. So if you do get to know of an organizer, you can pitch your idea to them and then take it forward. Yeah. Now, one question that I have again in my mind, I want to ask you. You are featured under Forbes. You're a speaker of TEDx. You got award from Bill Gates. How these all added value to Every Infant Matters?
I think the visibility was the biggest value add. Visibility. Visibility and that stamp of approval, that Okay. stamp that we get from Forbes, from Mr. Gates, from One Young World, from any of these international agencies. It really, these are agencies which do their due diligence in a Right. massive way. Like they will really dig deep and make sure that your work is completely clean and completely legitimate before giving you such a accolade or an honor. So to have that sort of in a way it's an indirect impact assessment, True. right? So to have that kind of impact assessment done and to be given that stamp of approval is the biggest value add. Okay. If anyone from our country wants to start the same work that you are doing, like Every Infant Matters, or maybe any other NGO you want Yeah. to start in terms of healthcare, what are the parameter or what are the things that is required? Can you tell a little bit about it? I think the main thing that is required is an idea. An idea can change the world. Yeah. But more than the idea, there should be some sort of personal motivation coming from within. Yeah. So everybody has a story, everybody has hardship, struggles, and when you go through certain struggles in your life, you understand the way to deal with those struggles. And the best way for society to progress would be if what I have learned in dealing with those struggles, if I could tell the world how I dealt with them and provide that same solution based model to the rest of the world. It could be anything, it could be mental health, it could Yeah. be something education struggle, career struggle, any kind of struggle. I have been through it, I have tackled it, and it took me a lot of effort to tackle it because I had no guidance. But if the same experience of mine can be used as somebody else's survivor guide, Yeah. then that is the main thing that will make the world progress, according to me, and that is what is needed. That empathy is needed, that I have this problem but there are thousands of others who also have this problem. मैंने तो सीख लिया कि मैं कैसे टैकल करूं, अगर मैं औरों को भी ये शेयर कर दूं तो कितना अच्छा रहेगा. This feeling of wanting to empathize with the rest Right. of the world is what is needed to get into this change making sector. Exactly. All right. So, Dr. Batra, when I talk about your education, you completed your education in 2019 and it's 2024. After completion of your college days, you jump into charity world. How you managed your personal life? So I won't lie, it was difficult, and initially there was not much time for personal life. I used to try to balance things out by spending time with my family and trying to work at the same time. And as a result, my personal life did get neglected. So I got married a little late, I would say, in compared to Indian society norms. Like I crossed 30 when I got married. But I think I was lucky that way, that my good work translated into good karma, that I got an amazing life Yeah. partner. Touch wood. So I think everything you do, I really believe in karma, that the good you put out in this Yeah, world comes exactly. back to you in different forms. Definitely, yeah. So yeah, I can just say that it's touch wood worked out for me, and I'm sure it'll work out for everybody else who's also struggling. Yeah. Okay, the work that you're doing under Every Infant Matters, now I believe it comes with mental stress, definitely, Yeah, because it you're does. trying to cover pan It India does, location yeah. and बहुत से लोगों से बात Yeah, करना, उनसे yeah. coordinate करना. So it definitely mental stress is. How did you manage your mental stress during this entire? देखिए, I will not lie, it is difficult. Stress भी होता है, anxiety भी बहुत होती है, and every now and then कुछ ना कुछ upheavals हो जाते हैं जिनसे कि आपको काफ़ी severe anxiety True. रहती है. बीच में अभी recently someone was blackmailing us for money, and then when we didn't give the money, started defaming us on LinkedIn. Oh. मेरे सारे contacts को एक message भेजा कि this NGO is not proper, this Okay. and that. तो ऐसे भी situations हो जाते हैं, तो they are very anxiety inducing कि हम इतना hard work कर रहे हैं, and for someone to malign us like this, to spread false information about us, and then we have to talk to our lawyers, we have to send out legal notices. It's just a big mess. So the whole thing is stressful. But I feel like
when you have supporters, you have cheerleaders in the form of your family or your partner or your, generally when your support system is strong, you are able to get by. Right. If you don't have that support system, it's very difficult. Okay. I believe we are about to end our session today. Any message, any specific message that you want to deliver to our audience? I think I'll just want to say that I think as youth of the world, not just the country, we have tremendous power. And we have the power of being young, we have the power of being strong, and we have the power of being innovative. And we have to realize that, see, this is our country and this is our planet. Nobody from the outside is going to come and clean it up for us. So it's up to us to make a change about things that we feel strongly about. And everybody feels strongly about different things. So I'm sure that even if each of us can just make a change in our families, in the way our family operates, or just our immediate surroundings, just our university, our college, our class, just that change can take a very big ripple effect and make a change in the whole world. Like that one plastic straw which you don't use can end up saving the planet. Yeah. That is what I tell everybody. So yeah. We really had a great conversation with you, Dr. Batra, today, and I believe हमारे audience को बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा. And anyone, if you want to contribute for Every Infant Matters, definitely you can get in touch with Dr. Batra. Thank you so much for coming.